Namaste bachcho. Today we'll do the exercise part of chapter number 5, that is part 5 Nirali Dipavali. So we'll continue from page number 32. Here you can see the first question, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. So you have to answer the following questions. The first one is का चिन्नम्मा की बेटी क्या काम करती थी? The meaning is what work Chinnamma's daughter used to do. The second one, खा उसके हाथ कैसे जल गए थे? The meaning is how her hands were burnt. गा चिन्नम्मा ने उसे काम पर क्यों भेजा था? The meaning is why did Chinnamma send her daughter to work. घा आलोक ने चिन्नम्मा को पैसे क्यों दिए? The meaning is why did Alok give money to Chinnamma. ङा आलोक के दोस्तों ने चिन्नम्मा को क्या दिया? The meaning is what did Alok's friend give to Chinnamma. चा दीपावली के दिन दीपक ने लड़की को गुड़िया क्यों दी? The meaning is why did Deepak gave a doll to Chinnamma's daughter. Now let's see the answers. Here the first one, का चिन्नम्मा की बेटी क्या काम करती थी? सही उत्तर, चिन्नम्मा की बेटी पटाखों के फैक्ट्री में पटाखे पैक करने का काम करती थी. खा उसके हाथ कैसे जल गए थे? उत्तर, पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने के कारण उसके हाथ जल गए थे. गा चिन्नम्मा ने उसे काम पर क्यों भेजा था? सही उत्तर है, चिन्नम्मा ने मकान के लिए कर्ज लिया था. उसे चुकाने के लिए उसने बेटी को काम पर भेजा था. घा आलोक ने चिन्नम्मा को पैसे क्यों दिए? सही उत्तर, आलोक ने चिन्नम्मा को दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे दिए. ङा आलोक के दोस्तों ने चिन्नम्मा को क्या दिया? सही उत्तर है, आलोक के दोस्तों ने चिन्नम्मा को बेटी के इलाज के लिए पैसे दिए. चा दीपावली के दिन दीपक ने लड़की को गुड़िया क्यों दी? सही उत्तर है, दीपक ने लड़की को गुड़िया दी क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था. So this was the first exercise. Now let's move on to the second one. प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाइए. So you have to mark it whether it's true or false. So the first one, का चिन्नम्मा बहुत खुश लग रही थी. Meaning is चिन्नम्मा was very happy. खा पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था. The meaning is there was a blast in firecrackers factory. गा चिन्नम्मा ने बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था. The meaning is Chinnamma sent her daughter to school to study. So you have to mark whether it's true or false. घा आलोक ने चिन्नम्मा की मदद नहीं की. The meaning is आलोक didn't help चिन्नम्मा. ङा आलोक और उसके दोस्तों ने चिन्नम्मा की बेटी की मदद की. The meaning is Alok and his friends helped Chinnamma's daughter. Now let's see the answers. The first one, का चिन्नम्मा बहुत खुश लग रही थी. It's false. खा पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था. It's true. गा चिन्नम्मा ने बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था. It's false. घा आलोक ने चिन्नम्मा की मदद नहीं की. This is also false. ङा आलोक और उसके दोस्तों ने चिन्नम्मा की बेटी की मदद की. It's true. So next let's move on to the third exercise, that is जोड़े मिलाइए. Match the following. So you can see on one side we have का हमने मकान के लिए, खा आलोक, गा ये तो केवल, घा सब लोग, ङा नहीं मेरा विचार. On the other side you can see 100 रुपये हैं, सहमत हो गए, बदल गया, उसके लिए कुछ करना चाहता था, जो कर्ज लिया था वह चुकाना है. Now you have to match it. Let's check the answers. The first one, का हमने मकान के लिए जो कर्ज लिया था वह चुकाना है. खा
आलोक उसके लिए कुछ करना चाहता था। गा, ये तो केवल 100 रुपए है। घा, सब लोग सहमत हो गए। ङा, नहीं, मेरा विचार बदल गया। So we have completed the third exercise. Now let's move on to the fourth one. प्रश्न है, किसने किससे कहा? Who said to whom? So here the first one, का, जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वे उसके हाथ में ही फट गए. So you have to write who said these dialogues to whom. The meaning is the firecrackers which she was packing exploded in her hand. खा, तुमने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम करने क्यों भेज दिया? The meaning is why did you made her leave her studies and send to work? गा, ये तो केवल 100 रुपए है, ये तो काफ़ी नहीं होगा. The meaning is this is only 100 rupees and that won't be enough. घा, हम तो समझ रहे थे कि तुम पटाखे छुड़ा रहे होगे. The meaning is we were thinking that you must be bursting firecrackers. ङा, नहीं, मेरा विचार बदल गया. No, I changed my mind. Now let's see who said these to whom. The first one, जिन पटाखों को वह पैक कर रही थी वे उसके हाथ में ही फट गया था. This was said by चिन्नम्मा to आलोक्स mother. That is, चिन्नम्मा ने आलोक की मम्मी से कहा. खा, तुमने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम करने क्यों भेज दिया? The answer is आलोक की मम्मी ने चिन्नम्मा से पूछा. गा, ये तो केवल 100 रुपए है, ये तो काफ़ी नहीं होगा. उत्तर है आलोक ने माँ से कहा. घा, हम तो समझ रहे थे कि तुम पटाखे छुड़ा रहे होगे. सही उत्तर है रोशन ने दीपक से पूछा. ङा, नहीं, मेरा विचार बदल गया. यह दीपक ने रोशन से कहा. So this was the fourth exercise. Now let's move on to the fifth one. प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. So you have to read the sentences and answer the following questions according to the chapter. First question, का, आलोक को इस बात से खुशी हो रही थी कि उसकी जान बच गई. The meaning is Alok was happy that her life was saved. The first one, किसकी जान बच गई? Whose life was saved? The second one, आलोक क्यों खुश था? Why Alok was happy? Third one, उसे क्या हुआ था? The meaning is what happened to that person? Now the next question, खा, सब बच्चे सहमत हो गए, केवल दीपक तैयार नहीं हुआ. The meaning is all children agreed but Deepak was not ready to help. Here, based on this sentence, 3 questions are there which you need to write the answers. So the first one is, कौन कौन सहमत हो गया? Who all agreed with it? Second one, दीपक क्यों तैयार नहीं था? Why Deepak was not ready? Third one, किस बात के लिए सहमत होना था? The meaning is for what they agreed. Now let's see the answers. So the first one is का. In that the first answer is चिन्नम्मा की बेटी की. Second one, आलोक खुश था कि उसकी जान बच गई. The third answer is उसका हाथ जल गया था. Now let's see the second answer, खा. In that the first one is आलोक के सभी दोस्त सहमत हो गए. Second one, वह पटाखे छुड़ाना चाहता था. थर्ड वन, पटाखे खरीदने के बदले उन पैसों को इलाज के लिए देना. We have completed the fifth exercise. Now the next one, व्याकरण बोध, that means grammar practice. Now here it's written, संयुक्त अक्षर में पहला वर्ण स्वर रहित होता है जबकि दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है. That is संयुक्त अक्षर. That means these letters are formed by the joining of
two different Vyanjanakshar. For example, you can see here the first one, Chinnama. And in Chinnama, this half of Ma and Ma is a Sanyuktakshar. That means it is formed by the joining of two Vyanjanakshar. So, it can be two similar Vyanjanakshar or two different Vyanjanakshar. And here this Sanyuktakshar means half of Ma plus Ma with any swar letter. The next one is Khatma, and here half of Ta and Ma is the Sanyuktakshar and half of Ta is alone, that is there is no swar with it, but with Ma, that is the full Ma, there is swarakshar with it. So, on the basis of this, you need to circle the letter in the words accordingly. So, you can see words are there. The words are Vispot, Mushkil, Factory, Zyada, Santusht, Ikhatta, Chillaya, Nishchay. So, you have to circle the letters that is without the swar. Now, let us see the answer. So, the first one is Vispot and the half of Sa you need to circle. Next one is Mushkil, and here you have to circle the half form of Sha. Next one, Factory, here you need to circle the half form of Ka. Zyada, you need to circle the half form of Ja. Santusht, and here you need to circle the half form of Cha. Next one is Ikhatta. So, here you need to circle the half form of Ta and half form of Ta with right with the Hal symbol. Next one is Chillaya. So, here you need to circle the half form of La. The last one is Nishchay. So, here you need to circle the half form of Sha. So, with this we have completed the first exercise of Vyakaran Bodh. Now, let us move on to the second one. प्रश्न है रिक्त स्थानों में डा, अडा, ढा, अढ़ा भरिए. So, you have to use these letters to fill in the blanks. So, here you can see few words are there with a blank space and you need to fill these letters in the space. Now, let us see the answers. The first one is Ka, Dher, Kha, Padhai, Ga, Baad, Gha, Chodna, Nga, Bhediya, Cha, Sadi, Cha, Badna, Ja, Ladki, Jha, Chadna, Iya, Thanda, Ta, Daliya, Tha, Dori, Da, Thoda, Dha, Tukda, Na, Dhakkan. So, this is the correct spelling for these words. Now, let us move on to the third one. Here, we are talking about past tense, present tense and future tense. So, in Hindi, for past tense, we say Bhutkal. For present tense, we say Vartaman Kal. Future tense, we say Bhavishyakal. So, here few examples are there. The first one, factory mein vispot ho gaya. That means the factory exploded. This is past tense, that is Bhutkal. Next one, Chinnama rasoi mein kaam kar rahi hai. That means Chinnama is working in the kitchen and we know this is the present tense. In Hindi, we say Vartaman Kal. The third one, Chinnama apni beti ko padhayegi. Meaning is Chinnama will teach her daughter. So, this is future tense and in Hindi we say Bhavishyakal. So, based on these tenses you have an exercise. Third one, प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के काल का भेद लिखिए. That means mention the tense of the following sentences. The sentences are का फैक्ट्री वाले अच्छा पैसा देते हैं. That means factory owner gives good salary. So, you have to say whether it's भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. खा छोटी लड़की के हाथ जल गए थे. So,
the hands of the little girl were burnt. Ga, शाम को चिन्नम्मा घर जाएगी. That means in the evening, Chinnamma will go to her house. Here you have to mention the tense of the sentences. Now let's check the answer. The first one, factory वाले अच्छा पैसा देते हैं. So this is वर्तमान काल. खा, छोटी लड़की के हाथ जल गए थे. This is भूतकाल. शाम को चिन्नम्मा घर जाएगी and this is भविष्य काल. So we have completed the third exercise. Now you can see you have an activity. You have to complete the exercise number 4 and 5. You have to write the answers in your notebook and submit in Teams. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhanyavad.